ट्रांसफॉर्मेशंस का ओवरव्यू मिलेगा कभी मैं इंशाल्लाह यहाँ पे कैजुअली सा एक्सप्लेन करूँगा बट ट्रांसफॉर्मेशन के हमारा एक बड़ा डिटेल एक या इससे ज़्यादा लेक्चर होंगे जो उसको मैथमेटिकली डिटेल में देखेंगे लेकिन राइट नाउ आई विल touch these transformations very casually okay even then if you do not understand please ask and I can explain that assumption ये है फिलहाल मैं 2D में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये कोई एक्सिस है ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और फर्स्ट करें ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये फिक्स्ड है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज फिक्स्ड दैट्स दिस इज अ फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको मैं कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहा हूँ मैं फिलहाल 2D केस ले रहा हूँ एक्चुअली तो 3D होता है वर्ल्ड भी 3D है कैमरा भी 3D जस्ट टेकिंग अ 2D equivalent of it so the third dimension so everything we develop here will work in 3D as well yes सही मैं ज़रूर ये कह रहा हूँ कि कैमरा और वर्ल्ड उनके एक्सिस की अलाइनमेंट सेम है यानी जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये है वो यही है जो वाई एक्सिस की यहाँ डायरेक्शन है यहाँ पे वाई एक्सिस की डायरेक्शन है लेकिन जस्ट ओरिजिन फर्क है यानी आप यूँ समझ लें कि जैसे मैंने इन एक्सिस को सेलेक्ट किया कंट्रोल सी किया और यहाँ जाके कंट्रोल बी कर दिया मेक सेंस यस नो ओके let's say this is now the center of this is C center of the camera इसके जो coordinates हैं let's say these are 2 and let's say these are 10 and 3 these are the coordinates and there is some point here जिसके coordinates हैं let's say 7 6 और ये 7 6 है with respect to the world सही है जी these 7 6 are with respect to the world the camera coordinate system there is a point which is the camera center which is at the 10 3 with respect to the world and remember the world is fixed world is not going to change world coordinate system is not going to change so let me work to the world coordinate system is fixed सही है ये हमने लास्ट में देखा था जब प्रिंसिपल पॉइंट ऑफसेट किया था ये पॉइंट इसके लिहाज से मेरे पास कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट के इसके लिहाज से मेरे पास इसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं Can I find out the coordinates of this with respect to this one? yes और ये बड़ा आसान था अगर आपको याद हो हमने so coordinate of this point with respect to this one are the following 7 minus 10 and 3 minus 6 remember yes और यहाँ तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा ये वेक्टर yes this minus that yes yes no 6 minus 3 6 minus 3 let me tell you what actually has happened let me tell you अब मुझे ये बताएं assuming कि ये जो पूरी स्पेस है ये जो पूरा डायमेंशनल स्पेस है वर्ल्ड जिसको मैं कह रहा हूँ जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हैं let's say these are fixed and let's say I can translate the whole space wherever I like by translation I mean I can move the space there the whole points that move there shift याद रखें जब भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है the world coordinate system stay fixed otherwise अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ट्रांसफॉर्म हो जाए then transformation effectively has no effect the coordinate system has to stay fixed and the space transforms और दूसरी चीज याद रखिएगा जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है तो वो स्पेस पे होती है वो इंडिविजुअल पॉइंट्स पे नहीं होती यानी ऐसा नहीं है कि दो पॉइंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं बाकी नहीं होते when you apply the transformation whole space transforms these are your points of interest that you focus on
वो वहाँ पे है. Rest of the points they also move. मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. And world coordinate system, fixed coordinate system never moves. Clear? अब फर्ज करें मैं इस पूरी स्पेस को प्रवास करेंगे. इसको ऐसे समझ लें जैसे ये फिक्स्ड है, यहाँ पे की लगा हुआ है या जो भी है ये फिक्स्ड है, और ये वो पूरी स्पेस है जिसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं. ये एक पॉइंट हमने हाईलाइट किया है और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. मैं इसको पकड़ता हूँ ऐसे करके इस पूरी स्पेस को. फर्ज करें मैंने पकड़ लिया, फर्ज करें गम लगी है यहाँ पे, ठीक है, और मैं पकड़ के इसको जनाब 10 यूनिट्स में इसको एक्स एक्सिस में खींचता हूँ पूरी स्पेस को, ठीक है जी, और मैं फिर इसको 3 यूनिट्स वाई डायरेक्शन में खींचता हूँ. इसके बाद होगा क्या? चूंकि पूरी स्पेस मूव हुई है ना, हर चीज मूव हुई है, ये पूरा स्ट्रक्चर भी मूव हुआ है. चूंकि मैंने 10 यूनिट्स इस साइड पे और 3 यूनिट्स इस साइड पे किया है, द कैमरा ओरिजिन नाउ कोइंसाइड्स विद द वर्ल्ड ओरिजिन. अब वो पॉइंट जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो पॉइंट है, जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर ली, तो अब इस पॉइंट का जो ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट है, इस पॉइंट का जो ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट है, उसके जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वही इस पॉइंट के कैमरा कोऑर्डिनेट्स. दोबारा से देखिएगा, सिर्फ ये देखें, अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को मूव करूं, जितना मर्जी मूव कर लो, इस पॉइंट के कैमरा कोऑर्डिनेट्स सेम रहेंगे. कैमरा के लिहाज से ये एक्सिस भी मूव कर रहा है, पॉइंट भी मूव कर रहा है, तो वो पॉइंट एक्सिस के लिहाज से तो वही है ना. वो जो रिलेटिविटी की कुछ चीजें मुझे ज्यादा पता नहीं उसका, लेकिन कुछ इसी तरह की बात है. सही है? यानी आप पॉइंट मूव करते हैं तो जो मिरर है वो भी मूव करना शुरू हो जाता है, तो दे स्टे फिक्स्ड. ऐसा ही है. अब अगर मैं पूरी स्पेस को -10 से ट्रांसलेट करूं, 3 से ट्रांसलेट करूं, so this structure will shift. Yes, this point will go as 0 0. This point 7 6 will go to 7 -10, 6 -3. The other points will go to their location accordingly because पूरी space move हुई है. We are just focusing on this point. सही है? अब जब मैंने पूरा स्ट्रक्चर मूव किया तो ये पॉइंट जो है 10 3 ये 0 0 पे चला गया. ये पॉइंट 7 6 जो है ये इस पॉइंट पे चला गया, और जो कैमरा है वो वर्ल्ड पे आके मैप हो गया. यस. अब चूंकि ये पूरा स्ट्रक्चर मूव करके यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट है ये अब भी यहाँ पे है कैमरा के लिहाज से. अब जो इसके कोऑर्डिनेट्स वर्ल्ड में है ना ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, वही इसके कोऑर्डिनेट्स कैमरे में. Yes, no. Yes. Is that digestible? Yes. Is that okay? Yes. बेसिकली मैं यही किया ना कि पहले हम वर्ल्ड के लिहाज से कैमरे के सेंटर को देख रहे थे, और अब हमने कैमरे को भी वर्ल्ड का सेंटर बना दिया, और अब उसकी वजह से जो कैमरे के लिहाज से लोकेशन होगी वो वर्ल्ड का वो सेंटर होगा. मैं बेसिकली बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम तो आपने किया था ना कि मैं अगर इस पॉइंट को इसके लिहाज से मेजर कर दूं, मैं इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर देता हूँ. तो व्हाट इज द इंट्यूशन बिहाइंड इट? What has happened actually? The space transforms, and at the end of the day, you measure everything in world coordinate system. Make sense? अब आपको चीजें कैमरे में चाहिए थी, आपने वर्ल्ड में मेजर की, नहीं मुझे कैमरे में चाहिए. The only thing is coincide camera with the world. No confusion, no conflict. अब अगर वो पॉइंट, अगर मैं पॉइंट को सिर्फ मूव करता, कैमरे को ना मूव करता, तो मेरी पिक्चर खराब हो जाती. समझ आ रही? जिस सीन को मैंने पिक्चर करना है और जो कैमरा है, अगर वो पूरा मूव करे, जिधर मर्जी मूव करे, तो पिक्चर विल नॉट चेंज. Yes, no. Which I mean, the location doesn't change in the image. Yes, no. So far so good. So अगर आपको कैमरा, so assumption, अगर आप
ये अलाइंड हैं, यू कैन इजीली फाइंड आउट कि ये कैमरे में जिस पॉइंट को आप इमेज करना चाह रहे हैं, अगर वो कैमरे में अवेलेबल हो तो इमेज कर सकते हैं ना। यू कैन इजीली फाइंड आउट कि ये कैमरे में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। The coordinates in the camera are these. Yes? Second case, world axis and camera axis they are not aligned. Make sense? अब तो हमने ये कहा था ना कि वर्ड एक्सिस और कैमरा एक्सिस अलाइन है, सेपरेट डिफरेंट है। अब कैमरा किसी भी जगह पे किसी भी पोज में है, अब क्या करें? Which is a typical case. सही है जी? So let's see. So far so good? Yes, no. यार ये समझ ना आए तो मुझे आगे नहीं जाने देना आपने। So ये बिल्कुल ये ज़हन में रखना आपने, ये आपको बिल्कुल समझ में आएंगी तो फिर हम आगे चलेंगे। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि कैमरा किसी भी ओरिएंटेशन में, कैमरा के एक्सिस और वर्ल्ड के एक्सिस दे आर नॉट अलाइंड। यानी अब तो मैंने फिक्स किया होता ना, तो कैमरा का अगर एक्सिस, वर्ल्ड का अगर एक्सिस ये तो कैमरा का भी यही, कैमरा को ही लाना, ऐसे ना करना। हम कहते हैं कैमरा किसी भी ओरिएंटेशन में पड़ा जी, ओरिजिन वर्ल्ड फिक्स है, वर्ल्ड फिक्स है, कैमरे का कोई सेंटर है, कोई उसकी ओरिएंटेशन है। अब क्या करें? मेक सेंस? यस, नो? व्हाट शुड वी डू? So assume now again let's say this is x-axis of the camera and let's say this is y-axis of the camera. Yes? Yes. And the center of the camera is again let's say 10 degrees. कोई भी point ले सकते हैं। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें निकालना इज नॉट दैट इजी। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रोटेशन समझ आ रही है? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और बाय द वे ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं ये अब जो है दिस इज अ रोटेटेड वर्जन ऑफ द स्पेस। दैट्स ऑल। समझ आ रही? यानी कि हम पूरी स्पेस को रोटेट कर दूं तो किसी एक पॉइंट पे वो एक्सिस इस तरह का होगा। लेकिन याद रखें रोटेशन जब भी होती है देयर इज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन, कॉमनली द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज वर्ल्ड ओरिजिन। अगर आप कहेंगे मैं अभी इनके एक्सिस को सीधा कर देता हूं, करना बिल्कुल वही, इस ये पूरा स्ट्रक्चर फिक्स है, पहले तो ओरिजिन पे जाओ, इसको ट्रांसलेट करें, इसको रोटेट कर दें और अब जो वर्ल्ड में कोऑर्डिनेट्स हैं वही कैमरे में। दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन फिजिकली ये है कि पहले आप ट्रांसलेशन कर लें, पहले आप ट्रांसलेशन कर लें। यही पॉइंट सर, पहले ट्रांसलेशन क्यों करें? पहले हम मतलब फिक्सिंग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरा भी इंट्यूटिव कम लगता है, इंट्यूटिव वो कर सकते हैं, पहले रोटेशन करें फिर भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उसमें जो ट्रांसलेशन के पैरामीटर्स हैं फर्क आएंगे, वो 10 और 3 नहीं आएंगे। सो इफ यू रोटेट फर्स्ट then translate will no longer be -10 and -3. जब वो सब अदर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन तो पूरी की पूरी स्पेस होनी है ना, सॉरी रोटेशन तो पूरी की पूरी स्पेस होनी है। रोटेशन अबाउट होनी है ओरिजिन में, वर्ल्ड ओरिजिन। जब मैं रोटेशन करूंगा ना तो रोटेशन पूरी स्पेस होनी है, तो ये पूरी रोटेशन के साथ साथ ये पूरा स्ट्रक्चर ट्रांसलेट भी करेगा जब रोटेट करेगा। उसके बाद ट्रांसलेशन जो है ना वो 10 और 3 की नहीं रह जाती। कन्विंसिंग पीपल दैट इज अ बिट, आई मीन टू दिस लेवल, उससे बेहतर ये होता है कि आप कहेंगे पहले ट्रांसलेशन कर लें रोटेशन कर लें। अदर वे अराउंड इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि ट्रांसलेशन 10 और 3 की नहीं होगी, वो ट्रांसलेशन फर्क वैल्यू क्यों है वो थोड़ा मतलब समझने में मसला आ रहा है कि वो यार ये बता रहे हैं फिर नहीं, यहीं से रह के मैं अगर पूरा उसे सीधा करने की कोशिश करूंगा तो वो कहीं और पहुंच जाएगा। So let me put the question to the house and then I will answer. The question is should we do translation first? क्या मैं पहले पूरी स्पेस में से 10 और 3 सबट्रैक्ट कर दूं so that कि ये ओरिजिन पे आ जाए लेकिन ओरिएंटेशन इसकी यही है, और फिर मैं पूरी स्पेस को रोटेट करूं? सही है? तो अब ये पॉइंट वर्ल्ड में जहां पे होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कैमरे में भी यही रहेगा। यस नो? तो वो ये कह रहे हैं कि व्हाई नॉट मैं पहले रोटेशन करूं बाद में ट्रांसलेशन करूं? सही है? एक बात नहीं है, उसकी वजह ये है मैं बाय द वे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे ये गिवन है, मेरे एक्सिस जो है वो गिवन है ए बी सी डी। Let's say I'm given the new axis with respect to the x-axis of the world.
हाँ So मुझे orientation given है. Camera axis with respect to world coordinate system are given. So now I can find out कितनी rotation करोगे या land हो जाए. Given these axes, I can find out कितनी rotation करोगे. वो तो ठीक है समझा रही, उस पे हम वेट तब उसके एक्सपेक्टेशन पिक करेंगे, लेकिन बिना ट्रांसलेशन के हम उसको सही करेंगे. नहीं मैं ट्रांसलेशन करनी है. देखिए एक हैप्पी सिनेरियो ये है. Translate with -10 and -3. Then you'll be having the following situation. This is XC. This is YC. And the point will be here. And the point will be here. 7 minus 10 is 6 minus 10. सही है जी? ये जो पॉइंट है वो शायद यहाँ पे होगा ट्रांसलेशन के बाद. मतलब करीब होगा या नहीं होगा. सही है? अब आप पूरी स्पेस को रोटेट कर दें. इतना रोटेट करें कि XC becomes X and YC becomes Y. और XC और YC आपको गिवन होगा. सही है? तो उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे. अब ये जो ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड पॉइंट है, अच्छा ये सारा आप स्पेस करेंगे इस पॉइंट पे, लेकिन वो स्पेस भी हो चुकी होगी. लेकिन चूंकि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये एक पॉइंट है, तो ये जो ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट है ना, फाइनली अब इसके वर्ल्ड में जो कोऑर्डिनेट हैं कैमरा में भी इसके ये समझ आई बात? क्योंकि कैमरा भी वो साथ साथ मूव कर रहा है ना. मेरी बात समझ आ गई? अब उनका सवाल ये है कि व्हाई नॉट कि हम पहले रोटेशन करके एक्सिस सीधे करने के बाद में ट्रांसलेशन कर लीजिए. इसमें होता ही है कि जब आप रोटेशन पहले करेंगे तो रोटेशन इज ऑलवेज अबाउट ओरिजिन. ऑलवेज अबाउट ओरिजिन. तो जब मैं रोटेशन करूंगा, अब ये ऐसे नहीं कि मैं इसको इसके अबाउट घुमाऊंगा. मैं इसको इसके अबाउट घुमाना चाह रहा हूं और इसी के अबाउट ये घूमेगा पूरा. तो जब ये घूमेगा, I will be applying a lot of rotation to make its axis aligned, maybe this one. Then it will become axis aligned to this. And then I will be having a different translation to go here. X coordinate will be different, Y coordinate will be different in translation sense. और रोटेशन भी बड़ी अजीब सी होगी. वो रोटेशन नहीं होगी जो शायद यहाँ पर होगी. इक्वल होगी या नहीं? That I guess will be इक्वल. तो हम सर translation will change rotation scales. हम कोड इस तरह कर लेते हैं कि हम इसके मुताबिक इसको रोटेट करते हैं. हमें लाजमी है जो हमारा ओरिजिन है वर्ड का उसके अकॉर्डिंग है. वर्ड को एक चीज फिक्स करनी है आपने. स्टेप वर्ड को इंप्लीमेंटेशन में तो एट द एंड ऑफ द डे यही होना है. शायद इधर से उधर जाएं उधर से इधर, क्योंकि पॉइंट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा. वो यही लगेगा. कैमरा का सेटअप पे सीधा है तो हमें जाना पड़ेगा. यस नो. हाँ तो सर ये Okay, there is a point that is difficult. Yes. आप ट्रांसलेशन करने रोटेशन करने के बाद आप उसको कैसे मेजर कर रहे हैं ट्रांसलेशन करने के बगैर कि वो पॉइंट सेम है वाई सी और वाई. क्योंकि अभी हम ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि इक्वल है. ये सभी equal है. एंगल इक्वल है. अभी कह रहे हैं कि पहला पॉइंट ये था कि हम पहले उसको ट्रांसलेट करेंगे Yes. वर्ड ओरिजिन पे, फिर हम ये करेंगे कि रोटेट करेंगे ताकि वो इक्वल हो जाए. अब बिना ट्रांसलेशन के हम कैसे कर रहे हैं वो रोटेशन करके उसका हमें कैसे पता चलेगा ये इक्वल हो चुके हैं. वाई सी और वाई करेंगे एक्स सी और अभी ट्रांसलेशन में किसी रोटेशन करते हैं. कैसे पता लगेगा कि पता नहीं हो गया एक्सिस के साथ. काशी तुमने इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन जरूरत भी नहीं है. ये कह रहा है कि आपने इतने एंगल्स को रोटेट किया पूरी स्पेस को और वो उसके आगे अलाइन हो गया. ठीक है, आपको कैसा पता चला कि अलाइन हो गया? I know this point. Yes, yes. I know this point. Yes. I need this vector to become 1 0. So मैं जो रोटेशन अप्लाई करूँगा वो इस पे भी हो रही है, इस पे भी हो रही है. करते जाएं until it becomes 1 0 and this becomes 1 1. So there are ways to. On rotation matrix, I will be having a full-fledged lecture on that, particularly for 3D rotations. So I'll explain rotations at length, inshallah. So that will at the end of the day, that's a matrix. This is a orthogonal matrix having some properties. I will apply that and it will become aligned. Given the axis, given these values, I can find out that matrix that does this. Given this, क्योंकि ये given है. मुझे एक्सेस गिवन है. एक्सेस गिवन नहीं है फिर तो मुझे नहीं पता. एक्सेस मुझे गिवन है,
Given the axis, I can construct a matrix. When I multiply that matrix, I will get just a line, everything. I can estimate that matrix very quickly. How to do that, I will explain that in a separate lecture when I will explain 3D rotations in detail. Okay, yes. अगर आप ट्रांसलेट नहीं करते हो फिर रोटेट करते हैं तो रोटेशन तो हमेशा ओरिजिन के अबाउट होती है और बताया थोड़ा सा ऐसे नहीं आगे यहाँ पे सीखा होगा जब रोटेशन कर करके मतलब यहाँ पे आगे नहीं सीखा होगा देखें हाँ इसको जोड़े जरा ऐसे करके यहाँ पे लकड़ी लगाएगा उस लकड़ी को ऐसे खींचे सही फिर उसके बाद जो ट्रांसलेशन पैरामीटर्स हैं वो -10 -3 नहीं होंगे वो फर्क होगा सही है so you can achieve the same using rotation first and then translation but the feasible way is to think about translating first and then rotating either way is fine make sense okay so what should we do translate and then rotate and now apply this translation and rotation on the point ठीक है क्योंकि ट्रांसलेशन और रोटेशन पूरी स्पेस पे लग चुकी है दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये कहाँ गया यहाँ पे गया अब कैमरा भी कहाँ पे जा चुका हुआ है तो अब तस्वीर खींचने क्योंकि अब ट्रांसफॉर्म पॉइंट जो है वो कैमरा में रिप्रेजेंटेड है अब पीछे वाली मशीन भी लगा देंगे गुड टू गो सही है जी एंड विदाउट प्रूफ में अभी बता रहा हूँ कि रोटेशन इज अचीवेबल थ्रू अ मैट्रिक्स जस्ट मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स टू अ पॉइंट एंड द पॉइंट विल रोटेट and I'll explain that why rotation is linear, why we can do that in 3D in detail. Right now assume that rotation is achievable. यानी अगर मैंने किसी एक point को rotate करना है, I will just multiply that point with a particular matrix of rotation and it will rotate that point. Yes, no? So far? No? Okay. If I want, all am I saying is this, without proof. I'm saying this. If this is a point, and this is its position vector, and I want to rotate this point or this vector with angle theta, then this is x1, y1, this is x2, y2, where x2, y2 is the rotating value of this point. Then this is achievable by a linear transformation, by a matrix that does this. And I am stating this without proof right now. So rotation, so this is the rotated point. So rotation can be achieved through a matrix multiplication. So this I am stating without proof right now. I will explain that at length, then I will explain rotation in 3D. We'll start from rotation in 2D and stuff. I do not want to spend time in this lecture because that requires a whole lecture. Right. 3D rotations. Okay? Right now, 2D, 3D, 4D, whatever, the rotation is achievable by a matrix. Or technically, rotation is a linear transform. Okay? Yes, no? Yes. Okay. So, and if you represent your points in homogeneous coordinates, which we do, then translation is also linear. Translation is also achievable by linear transform after homogenization. Okay? So this is the total framework. Here, see this. Let's say my cameras, the same analogy works in 3D, okay? So you have this world and this camera, and this is the point you want to image in the camera. Just move the whole space so that the camera and the world they become aligned. The point has also moved. Then orient the camera with respect to so the point has also be oriented, and then tuck. Yes? Yes, no? Okay. So this is the point. Should I erase this? Yes. So this is the point, let's say, X world, Y world, Z world, and 1. This is the 3D location of a point in world coordinate system. Okay? Yes, no? Yes.
I will first apply a translation on it, which is of this 100 minus cx, where this is the camera coordinate, x coordinate, camera x coordinate, 0 minus cy, 0 minus cz, 0, 0, 1. After this translation, you can see that the result will be this. Can you see it? Yes. See? This is the result, yes? And this is what we require. We first translate our point. We first translate the whole space. This point goes there. Yes, no? And camera center goes to 0. Yes, no? Yes. Now this is the transform point after translation. Now apply a rotation to this, and let's say this R is given. If the camera axis with respect to world coordinate systems are given, then we can find out this R that maps it to x, y, z axis, that aligns it. Say it, and I will tell you how to do it in a lecture. Clear? This is again, this is a 3x3 rotation, and by homogenizing it 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, this matrix. After that, now the point that has been in the world, now it is in the camera. Now it is xc, yc, zc, and 1 after this transformation. And now go back and apply this matrix. Yes, no? ये पॉइंट वर्ड में ठीक है, ये कोई वर्ड का पॉइंट, कोई पॉइंट है 3D का जो जिसके वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स दिया है, ठीक है। कैमरा का सेंटर भी में दिया है cx, cy, z। तो सबसे पहले हमने पूरी स्पेस में से सबसे पहले पूरी स्पेस में से ये सब्ट्रैक्ट किया, ट्रांसलेट किया, फिर पूरी स्पेस को इस कदर रोटेट किया कि जो कैमरा के एक्सिस हैं दे बिकम x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। वो पॉइंट भी डेफिनेटली अपनी किसी जगह पर रोटेट होकर पहुंच गया होगा। अब ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो कोऑर्डिनेट्स वर्ल्ड में हैं कैमरे में मिल रहे हैं, बिकॉज नाउ कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इंडीड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। Yes, no? All this matrix that we have to estimate. Given the axis of the camera, what is this 3x3 matrix that maps it to x-axis, y-axis, z-axis? We have to estimate this matrix. We have to make this matrix. And there's a quick way to do that. Right now, just assume this is a 3x3 matrix, and it is achievable once we know the axis of the camera. We know what rotation will map it to x, y, and z axis. Yes? But the critical thing is, after applying these two transformations in this sequence, the point really becomes in camera coordinate system and the rest of the machinery works. Yes, no? No? So here is what we are going to do. X world, Y world, Z world, 1. Apply some translation on it, and that translation is 4 by 4. Then apply some rotation on it, and that rotation is again 4 by 4 in homogeneous form. Then apply that matrix, our favorite camera matrix. वो मैट्रिक्स के जब कैमरा कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हो तो वो मैट्रिक्स आपके लिए कोऑर्डिनेट्स बताता है। वो मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं, दैट इज ax s x 0 0 a y y 0 सही है, जिसके इस पार्ट को मैं k का करता हूँ,
This is K. Anyways, this is a 3x4 matrix. और ये क्या चीज है? यहाँ तक देखिए, ये क्या चीज है? This is XC, YC, ZC and 1. ये सारा यही नहीं है? ये कैमरा में आ चुका है? जब कैमरा में आ गया ये अप्लाई कर दो, and you have your image X, Y and S or maybe W, and your XI which you need is really X over W, and your YI is Y over W. That's the whole question. Yes, no. यहां से ऑनवर्ड्स तो आपको पहले से पता है। ये जो दो चीजें हैं ना, ये इसको कैमरे में रिप्रेजेंट करेंगे, और कैमरे में रिप्रेजेंट होगा तो ये मैट्रिक्स अप्लाई होगा, नॉट अदरवाइज। So far so good. If there are confusions, I will जी कोई ट्रांसलेशन मैट्रिक्स वहां पे मैंने वैसे लिखा, ये क्या होगा, ये एग्जैक्टली ये होगा। ठीक है जी, यस नो। अब ये एक बड़ी बात मैं करना हूँ, देखें बड़ी तो नहीं है। इस मैट्रिक्स को जरा गौर से देखेंगे, जो है ये वर्ड से पिक्सल पे बनता है। दिस इज योर कैमरा मैट्रिक्स P। वर्ड से बनाएगा, पिक्सल पे बनेगा, कैमरा दुनिया में जहां मर्जी जो जिस पॉइंट को इमेज करना चाह रहा है उसके कैमरा में कोऑर्डिनेट्स अगर अवेलेबल नहीं भी हैं, that's how you do it. As long as you know the center of the camera with respect to the world, as long as you know the orientation of the camera with respect to the world, then you can image that by this trick. So this is full camera matrix having 12 numbers in it, 3 by 4. Out of these 12 numbers, 5 are intrinsic parameters. There are 6 extrinsic parameters. I will explain that when I will explain rotation. And 1 is because of the homogeneous coordinate. I will explain the degrees of freedom of this matrix in rotation matrix correction. Right now, this is the camera matrix. If this is okay, then I will move on. So given this matrix P, given a word point X, W, which is X, W, Y, W, Z, W, and 1, I will get the image, and then I will non-homogenize it, and I will get the image coordinates X, Y, Y. G, is that okay? Yes, no? G? Last one repeat. Is that okay कि ये पॉइंट इसके और इसके गुजरने के बाद कैमरे में आ चुका है? Is that okay और ये भी okay नहीं? अगर कैमरे में आ चुका है तो कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आ चुका है तो अब तो ये मैट्रिक्स अप्लाई करें and you will be having your image coordinates. So this point, when transformed by this and then transformed by this, now has coordinates. By the way, the was taking, जब ये point इसमें से गुजरेगा, इतना हिस्सा, तो इसका जवाब आएगा 4/1. Yes? जब ये 4/1 इससे गुजरेगा, तो इसका जवाब आएगा 4/1. तो अब यहाँ पे तो एक point पड़ा हुआ है ना, तो कैमरे में रिप्रेजेंटेड है. और जब मैं उस पे ये मैट्रिक्स अप्लाई करूंगा मुझे इमेज कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ये अप्लाई करने से इमेज कोऑर्डिनेट्स क्यों मिलते हैं ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यस नो? यस यस, इज दैट ओके? क्लियर है? ओके।
So this x is equal to px, where this capital X is the point, 3D point in the world. This P is your camera matrix. This X is the point in the image, but it has to be non-homogenized. ये भी homogeneous form है. सही है जी? ये K R pi T क्या है? I will explain that when I will explain the rotation in detail. What is this K R pi T? सही है? फिलहाल the point is X is equal to Px, and the camera is a 3x4 matrix that has rotation, translation, and intrinsic parameters in it. Yes, no? So far, so good? अब सवाल यहाँ पे ये है, सवाल ये है, आपका जस्ट इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप करने के लिए आगे तो है, इसकी स्लाइड पूरी है। मुझे अगर ये पता चलाना है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट मेरे कैमरा में, मेरी इमेज में किस कोऑर्डिनेट पे आएगा, तो मैं पहले कैमरा लेके आऊँ, जैसे जिसको तो से या मेरे पास कोई अपना कैमरा या मोबाइल कैमरा है, पहले एक वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे मैं फिक्स करूँ, दैट इज वन टाइम कॉस्ट कर दिया। जिस पॉइंट को मैंने इमेज करना है उसको वर्ड के लिहाज से मेजर करूँ, एक ही एक से ज़्यादा पॉइंट्स को वन टाइम कॉस्ट है, कर लिया। सही है? या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे ह्यूमन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं लकड़ी के, उसके सारे पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन मेजर्ड होते हैं। तो अगर आप सिर्फ उसका ओरिजिन वर्ड के लिहाज से मेजर करते हैं तो सारे पॉइंट्स आपको पता चल गए विद रिस्पेक्ट टू वर्ड के। यस, वो भी कर लिया। अब कैमरा लाऊं, फिक्स करूं यहाँ पे, इसका सेंटर और ओरिएंटेशन कैसे पता करूं कि ये इमेज कहाँ पे आएगी? समझ आ रही? मैंने अभी तो बताया था ना, इट इज अज्यूम्ड के सेंटर पता है, इट इज अज्यूम्ड के रोटेशन पता है। तो ये जो काम मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ जस्ट, इसको कहते हैं कैमरा कैलिब्रेशन। होता ये है कि आप कैमरा लेके आते हैं, ठीक है, बहुत सारे कैमरास में तो ये इंटरनल पैरामीटर्स भी सेट नहीं करने देते हो, फोकल लेंथ इतनी करनी है, ये वो मैनुअली कर सकते हैं, कुछ पे करने भी देते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन व्हाट इफ आप कैमरा लेके आए, आप विजुअली उसकी जो भी क्वालिटी सेट करना चाहते हैं कर लें, दैट्स द विजुअल सेटिंग दैट यू रिक्वायर। और अब आप चाहेंगे व्हाट इज द पी मैट्रिक्स इन दिस सेटिंग, क्योंकि P गिवन है तो देन वी कैन इमेज, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर P गिवन है देन वी कैन रिवर्स इमेज व्हिच इज रिक्वायर्ड। असल में तो ये नहीं है ना कि P गिवन है तो वी कैन इमेज, P गिवन नहीं है, आप ठक करें इमेज आ जाएगी। द पॉइंट इज उसको रिवर्स कैसे करना है, 3D में कैसे बनाना है, उसको 3D मॉडल कैसे बनाना है, फॉर दैट P इज रिक्वायर्ड। P इज रिक्वायर्ड एग्जैक्टली देयर। मैं आपको इमेजिंग प्रोसेस सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि हम इसका रिवर्स कर सकें। हाँ जी, P उसमें रिक्वायर्ड होगा। तो अभी तो मैं P का स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। इमेजिंग के दौरान P है नहीं है आपको पता है नहीं है, हु केयर्स, इसका तो पता चलेगा जब आपने रिवर्स करना है, P इज रिक्वायर्ड। अच्छा तो P होता, आपसे कोई यार 3D रिकंस्ट्रक्शन करनी है, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, लेट्स से 3D रिकंस्ट्रक्शन करनी है, मेरे पास पूरी इमेज है, तो कैमरे से मैंने तस्वीर खींची, जरा 3D मॉडल मुझे बनाना है। मैंने वो पहाड़ की, माउंटेन की, वो बड़ा खूबसूरत व्यू था, उसकी ये इमेज है, जरा मुझे 3D मैश तो बना दो उसकी, मैं ऊपर जरा रेंडर करके लोगों को दिखाऊं, अगर कलर इसका सब्ज हो तो ऐसे लगेगा, ऐसे हो तो ऐसे लगेगा। आई वांट अ 3D मॉडल, और मैं उसको ऐसे व्यू करके दिखाना चाहता हूँ, ये देखें पहाड़ घूम रहे हैं। दैट एक्सपर्ट वो तस्वीर के देखेगा, उसके बाद कहेगा गिव मी द कैमरा मैट्रिक्स। सही है? इससे ज्यादा भी वो मांगेगा, वो कहेगा इसी सीन की मुझे कम से कम दो, कुछ और भी चीजें मांगेगा, लेकिन जो पहली चीज मांगेगा वो कहेगा कैमरा मैट्रिक्स। अब कहेंगे क्या मतलब कैमरा मैट्रिक्स, ये कैमरा इससे मैंने खींची, ये आप रख लें। मेक सेंस? नॉट यू कैन डू दैट। जब आपने तस्वीर खींची थी तब कैमरा मैट्रिक्स क्या था, तब that is required along with the image to reconstruct 3D. That's why we are. Otherwise, that's okay. Go and just press the button. That's okay. Reverse will not be possible. Without understanding this geometry, reverse will not be possible. समझ आई बात की? So that's the whole motivation. I know. आपके ज़हन में ये सवाल बार-बार गर्दिश कर रहा होगा, मैं ऐसे करके घुटना टेढ़ा करके ये तस्वीर खींच लेता हूँ, क्या मुसीबत है? मैं 1 मिनट में इतनी खींच सकता हूँ तस्वीर, ये क्या कर रहे हैं? You cannot do the reversal of it until you understand that. Make sense?
will teach you camera calibration, all these stuff. That's simple stuff. Do it once and then you'll be very good to go for 3D construction. Make sense? Yes? Okay, so oh by the way, फिर ये कैलिब्रेशन करते कैसे हैं? वैसे जिस पे पूरी एक स्लाइड है, मैं आपको बता देता हूँ. कैमरा लेके आए, उसको फिक्स करें, जो भी सेटिंग है वो फिक्स कर दें. उसके सामने नोन स्ट्रक्चर रखें. नोन स्ट्रक्चर वो होगा कि जिसके कुछ पॉइंट्स आपने मेजर किए हुए हैं मैनुअली. फिर उसकी तस्वीर ले लें उस कैमरे से. अब उसके ऊपर आपने मार्किंग्स की होंगी, रेड ब्लू ग्रीन जो भी है. अब तस्वीर में जाके देखें कि वो जो पॉइंट है ब्लू विच हैज 3D कोऑर्डिनेट्स दीज, उसके अब 2D कोऑर्डिनेट्स ये हैं. इसके 3D इस 2D हैं, इसके 3D. So there are several points in 3D that you know in 3D and now you know in 2D because उनको आपने कलर किया हुआ था और वो मैप हो चुके हैं. तो वो कौन सा 3x4 मैट्रिक्स है जो इसको इस पे मैप करता है? That is an estimation problem. उससे आपको P मिलेगा. और ये कैमरा कैलिब्रेशन एक दफा होगी, कर लिया. सही है जी? वो P निकाल लिया. अब उस P को आप डिकम्पोज कर सकते हैं. Once 3x4 matrix is found, you can decompose it. कि अच्छा इंट्रिंसिक पैरामीटर्स क्या थे? इसकी ओरिएंटेशन इस वक्त कितनी है, इसकी ट्रांसलेशन. So you can find out each and every number in it. Make sense? ऐसा नहीं है कि कैमरा आता है उसके ऊपर P लिखा होता है. ऐसा नहीं. सही है जी? And once you have P with you, आप यकीन माने कंप्यूटर विजन में गया तो with you. सही है? Okay. Question. Very different question. आपके पास को पता है तो आपने फर्ज करेंगे कंप्यूटर विजन की दुकान खोली है. कंप्यूटर विजन के वहाँ पे प्रोडक्ट्स स्पेशलिस्ट आप कंप्यूटर विजन कंसल्टेंट बैठे हैं वहाँ पे. वो बंदा है, वो आपको एक मैट्रिक्स देता है. सर ये मेरा कैमरा मैट्रिक्स है, 3x4 मैट्रिक्स है. वो हो सकता है आपको कागज़ पे लिख के दे दे. ठीक है, 3x4 उसमें नंबर लिखे हैं 5 3 -1 2 3 3x4 मैट्रिक्स. आप कहते हैं ठीक है जी बताइए. सर मुझे इसका सेंटर पता करना. मेरा ये कैमरा मैट्रिक्स है, घर में लगा हुआ है. आप उससे हो सकता है पूछें यार ये कैमरा मैट्रिक्स तुमने एस्टिमेट कहाँ से किया? कैमरा तो एक फिजिकल डिवाइस है, घर में जाऊँ कैमरा मैट्रिक्स कैसे एस्टिमेट किया? और सर ये छोड़ें आप मुझे बताएं इसका सेंटर, वो जो कैमरा घर में लगा हुआ है उसका सेंटर कहाँ है? ऑब्वियसली वो सेंटर पूछ रहा है जो घर में कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे जो भी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स हुआ है उसके लिहाज से सेंटर की लोकेशन क्या है, वो ये पूछ रहा है. यस. So given the camera matrix, क्या कैमरा मैट्रिक्स में ये given just कैमरा मैट्रिक्स, क्या कैमरा मैट्रिक्स में ये इंफॉर्मेशन है कि वो बताए कि कैमरा का सेंटर कहाँ है? समझ आ रही है ना बात की? मैंने कहा था ना कैमरा मैट्रिक्स को डिकम्पोज करके उसके इंडिविजुअल पार्ट्स को पता कर सकते हैं. फाइंडिंग आउट सेंटर इज एक्चुअली वे मोर इजी. वेयर इज द सेंटर? सो एक तो ये ना कि कैमरा सेंटर ये है, ओरिएंटेशन ये है, P बना के दिखाएं. एक ये है दिस इज द कैमरा मैट्रिक्स, वेयर इज द सेंटर? ये रिवर्स क्वेश्चन. सही है जी? So I'm going to answer this question. बट उसकी याद पता होना आपको जी रोटेशन के मैट्रिक्स कुछ सिर्फ P पता है. P चलिए लेकिन उसके पता चला नहीं है रोटेशन का आर मैट्रिक्स इंडिविजुअली रोटेशन का पता होना जरूरी नहीं है. रोटेशन बीच में मल्टीप्लाई हो के कोई पूरा P पता है. इंडिविजुअली ओरिएंटेशन कितनी है ये पता होना जरूरी नहीं है. I'm going to show. सवाल समझ में आ गया? सवाल क्या है ये आंसर करने जा रहे हैं. Okay, so please I need your focus. फर्स्ट करें ये जो रेड डॉट है ना ये जो F के नुक्कड़ पे ये लगा हुआ है नजर आ रहा है माउस से? ये फर्स्ट करें ये है A in 3D A. ठीक है, ये है कैमरा सेंटर C, कैमरा सेंटर C और ये पूरी रे है आ रही है. और अगर मैं P अप्लाई करूं, और by the way this ray is modeled as this. If A is a point, let's say this point A, C is this point, then the line joining C and A has this form. And this we have already discussed in the very first slide. How to make a line between 2 points. Yes? Yes. अब इसमें जरूरी बात ये है कि लैम्डा की मैं जो भी वैल्यू रखूंगा वो एक पॉइंट आएगा इस लाइन के ऊपर. लैम्डा की कोई और वैल्यू रखूंगा एक पॉइंट आएगा इस लाइन के ऊपर. लैम्डा की वैल्यू ज्यादा रखूंगा वो पॉइंट शायद इधर आ जाए. लैम्डा की वैल्यू कम रखूंगा शायद इधर आ जाए. लेकिन इंपॉर्टेंट ये है
इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, it will map to the same image location. And this is what precisely we say we lose depth when making image. ठीक है, समझ आई? For example, इस पॉइंट से लाइट रे आ गई, इस पॉइंट से वो लाइट, ये जो पूरी लाइन है ये इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे। अब वो पॉइंट इस लाइन के अलाउंग कहीं पे भी हो, आगे हो या पीछे हो, उसे नहीं में उसी लोकेशन पे जाएगा। Yes, no. That means हम ये तो बता सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से कहीं से आ रहा है, कितना दूर है हमसे, ये जो दूरी होती है, this is called depth, ये हमें नहीं पता। And when in the imaging process, what we lose actually, we lose this depth information. Yes, and reconstruction means recover that depth. कोई चीज मुझसे कितनी दूर है, कोई थोड़ी दूर है, कोई ज्यादा दूर है, that makes a 3D. Yes, no. Okay. So if you see any point in this ray will map to the same image location. So for example, अगर मैं P apply कर दूं किसी भी point के ऊपर, it will map to the point जहाँ पे A map हुआ है. A ये point है ना, A जिस जगह पे मैप हुआ है ना, इस लाइन का कोई भी और पॉइंट उसी जगह पे मैप होगा. So the projection P, the image of P of any of the point in this ray is exactly where the A has been imaged. ये लैम्डा मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है? देखिए अगर मैं लैम्डा